Hello, assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well and fine with your friends and families. Uh, First of all of those students whose cameras are not open, kindly open your cameras. Mariam Fatma, Dua Khan, Abdul Kabir, Abdullah Alvi, everyone, open your cameras. Mariam, open your camera. Kinza, open your camera. Dua, Kabir, Zayan, Mariam Fatma, can you please open your camera? It's okay, Mariam. I just read your message. Okay, fine. But there is no issue, Mariam, to open camera. It's okay if you can attend the class, you can open your camera as well. Anyways, except Mariam, Nurul Hadi, Sabika, Fatma, why your cameras get off? I need to see everyone. Nurul Hadi, Hassan Ahmed, Abdul Kabir. See, this is the last time I'm telling you all. From tomorrow onwards, I need all of your cameras are open. Understand? I cannot waste my 5 minutes telling you guys, open your camera, open your camera. We don't have much time. So from next class, whose cameras won't be open, I'll just remove you guys. Understand? Except Mariam Fatma. Abdul Kabir, open your camera. And do not touch your screens. Open your camera and then do not touch your screens. Okay, let's start our class. To whom I assigned duties to start the class yesterday? Yes, Zayan and Jafar. Okay, first Jafar. Yes, teacher. Yes, Jafar, start. Give me a quick review of yesterday's class. Teacher, you read about past simple sentence. You show a video about past tense and some examples of like sentence. I kicked the ball. What we discussed in past simple tense? We discussed two what? What we discussed. Yes, what we discussed in past simple tense. 1 minute, teacher. Yes, Zayan, do you want to say something? What? Yes, Zayan. What we discussed in last class? We discussed past simple tenses. And We learned the form. We learned the forms of past simple tenses. no, we learned the forms of verbs. There are two forms of verbs. Teacher. One is regular and the second is irregular. Yes, yes, Jafar. Teacher. In the I tell about you irregular.
We only discussed regular verb, Jafar. We didn't discuss about Regular. irregular verbs yesterday. Okay? Okay, now tell me how to make a regular form of verb. Regular form of verb में क्या होता है? ED. ED what? Regular verb. ED से हम क्या करते हैं? ED को क्या करते हैं? Okay, let me tell you. Very good. Very nice try. Okay, let me tell you. Yesterday we had discussed about past simple tense. Before discussing what past simple is, we discussed what is a past. What is the meaning of past, right? Past meaning an action which has done before. एक ऐसा action जो पहले हो चुका है उसको बोलते हैं past. उसको बोलते हैं past. ठीक है? जैसे कि we took क्लास yesterday, हमने कल क्लास ली थी, तो कल वाली क्लास पास्ट में चली गई, राइट? हम जो अभी क्लास ले रहे हैं वो प्रेजेंट में है और जो कल हमने क्लास ली थी वो पास्ट हो गई. अंडरस्टैंड? पास्ट का मतलब जो गुजर गया, जो काम हो चुका, इट मीन्स पास्ट. ओके, उसके बाद बिफोर कमिंग टू अ पास्ट सिंपल टेंस वी डिस्कस अबाउट अ फॉर्म ऑफ वर्ब्स. How many form of verbs are there? There are two form of verbs, regular form of verb and irregular form of verb. Then we discussed regular. What is regular form of verb? Regular form of verb is any word in which we add ed to change it into its second form is called regular form of verb. ऐसा कोई भी वर्ब जिसको सेकंड फॉर्म में चेंज हम करते हैं उसके अंदर ed ऐड करके is called regular form of verb. और verb की second form हमेशा past में लगती है. verb की second form हमेशा past में लगती है. ठीक है? जो आपका action हो चुका होता है उसके लिए हम second form of verb use करते हैं. क्या हमने present में second form of verb use किया था? No. We use only verb. या तो verb के अंदर हमने s और es ऐड किया था या सिर्फ verb की first form use की थी. She plays a lot, I play a lot. लेकिन जब हम past में बात करेंगे तो हम play के अंदर ed ऐड कर देंगे तो sentence हो जाएगा I played a lot. Okay, I have given you a homework yesterday in which I posted a one video. Did you all watch that video? Did you all watch that video? Okay, so I'm gonna share one PPT here with you guys. Why do we use simple past tense? Completed action in the past. ऐसे एक्शन जो आपके पहले हो चुके हैं उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं. उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस. My mom made some pancake for us yesterday. हम अब कल की बात कर रहे हैं. मेरी मॉम ने कल कुछ पैनकेक्स बनाए थे. हम ये नहीं बोल रहे मेरी मॉम ने आज पैनकेक्स बनाए हैं या मेरी मॉम कल पैनकेक्स बनाएंगी. नो, वी आर टॉकिंग अबाउट yesterday. The action which has already done in yesterday, that's why it is called past. My mom made some pancake for us yesterday. Understand? A series of completed action in the past. देखें यहाँ तो एक action की बात हो रही है ना. My mom made some pancake for us yesterday. We are only talking. Zayan, first let me complete my lecture. After that, I will ask you.
Okay, anyways, my mom made some pancakes for us yesterday. मेरी mom ने कल कुछ pancakes बनाए थे हमारे लिए. अब आपकी आ जाती है पूरी series के आपने कल पूरा दिन में क्या-क्या काम किया. I finished my work, walked to the beach and found a nice place to swim. ठीक है, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, उसके बाद मैं बीच गया एंड देन आई फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम. उसके बाद मुझे एक अच्छी जगह मिली स्विमिंग करने के लिए. ठीक है, तो ये आपकी एक पूरी सीरीज हो गई जो आपने पास्ट में किया. यस जाफर. Teacher, I cannot see your screen. How many of you cannot see the screen? Inaya, you cannot see the screen? Or who else cannot see the screen? You all cannot see the screen. Okay, wait, let me share it again. Can you see it now? Yes, teacher. Okay. All of you, can you see the screen now? Kissa, can you see the screen now? Is it visible to all of you? Kissa, if you want to ask something related to the lecture first, let me complete the lecture. After that, I will ask you, okay? Okay, so yes, what I was telling you, why do we use past simple tense? We use it for the actions which has been completed in the past. हम उन actions के लिए use करते हैं जो past में हो चुके होते हैं, ठीक है? My mom made some pancake for us yesterday. Here we are talking about an action which had already been done yesterday, which is कि मेरी mom ने कल कुछ pancakes बनाए थे, ठीक है? Now we are talking about a series of completed actions in the past. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम एक पूरी सीरीज की बात कर रहे हैं, मतलब काफी सारे एक्शंस हैं जो पास्ट में हो चुके हैं. उन सबको हम कैसे यूज करेंगे? I finished my work, comma, walked to the beach, comma, found a nice place to swim. ठीक है, मैंने सबसे पहले अपना काम कंप्लीट किया, उसके बाद मैं बीच गया एंड देन आई फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम. तो ये सारे एक्शंस क्या अभी प्रेजेंट में हुए हैं या पास्ट में हो चुके हैं? यस कबीर, ये सारे एक्शन प्रेजेंट में हुए हैं या पास्ट में हो चुके हैं? यस, ये सारे एक्शंस पास्ट में हो चुके हैं. Hunain, there must be some problem at your end. Try to see the mic. Is it open or not? Okay, let's move forward. Verbs classification. How can be verbs classified according to the way from their past tense? हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ब यूज हुआ है, whether it is a regular form of verb or an irregular form of verb. ये हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? देखें, वर्ब की दो फॉर्म्स हैं, मैंने आपको कल ही बताया था. I told you yesterday there are two form of verbs. The first is regular verb and the second is irregular verb. Look at these verbs. Are these regular or irregular? Danced, played, went, read, wrote, cut, game, came, bowed, like. इसमें से कौन कौन से आपके रेगुलर हैं और कौन कौन से इरेगुलर हैं?
Kisa, you want to ask something or you want to tell something? Yes. Miss, regular is dance, play, Yes, dance and playing are regular. Yes, fine. and I have to tell you something because today was my birthday. Oh, it's your birthday today. Happy birthday, Kisa. Happy birthday. Thank And you, many, Miss. many happy returns of the day. Thank you. Okay, let's move forward. Kisa, can you please mute your mic? Okay. Okay. Up in previous screen, I showed you some verbs in which both the verbs were present, regulars too and irregulars too. Now we are discussing about a regular form of verb. How to create a regular form of verb when we add only ed at the end of the verb, it becomes regular form of verb. But we cannot do this with all the verbs. हम ये सारे verbs के साथ नहीं कर सकते. कुछ verb की different form होती है, second form बिल्कुल उनकी spelling ही different होती है. जिनकी spelling different नहीं होती, उनके end में सिर्फ ed लगा देते हैं, तो वो second form of verb में convert हो जाते हैं. Look here, laugh will become laugh. Smile will become smiled. Okay? Okay. In regular form of verbs, we add ed. Play equals to played. Understand, Inaya? Let's move forward. Okay. Simple past tense, positive form. देखिए, in present tense, I have told you what is the meaning of positive sentence and what is the meaning of negative sentence. Positive sentences are those sentences in which we don't use a word not. जिसके अंदर not का word use नहीं होता, all those sentences are positive sentence. और जिन sentences के अंदर not का word use होता है, जैसे I cannot eat this, I don't do this, I will not go to the market, not का word आ रहा, all of these sentences are negative sentences. All of these sentences are negative sentences. और जिन sentence के अंदर आपका question mark आता है, all of these sentences are interrogative sentences. Okay, Mariam wants to ask something. Yes, Mariam. Miss, can you? I know this is gonna sound mean actually, but can Mariam, you share? Mariam, wait. Mariam, yes. Mariam, ask again. What are you asking, Mariam? Can you? This will sound mean, but can you share Jaffer's mic, because whenever you stop speaking, a loud like voice comes. Mariam, I seriously cannot hear you. What are you saying? Can you speak a little louder and more clearly? Miss, Yes. Miss, Yes. I'm saying that can you shut Jaffer's mic before, because when you stop speaking, a loud bang comes in between. Mariam, can you write your question so that I can read it, because I cannot hear It's you. in the chat. Okay, it's in the chat. Okay, let me read it. Okay, Jaffer's mic is on. Okay. That's what you want to say? Mariam, but Jaffer's mic is already muted. I think he just muted his mic. It's fine now. I don't. It sounded weird before. Okay, now can you hear me properly? Show me a thumbs up if you can hear me.
All right. So we were discussing about a positive and negative form of sentences. So in positive form of sentences, we don't use a word not. हम not का word use नहीं करते हैं. Okay, we have only 7 minutes left and we have to conclude our class in it. ठीक है? और negative के अंदर हम not का word use करते हैं. ठीक है? ये तो हो गई भाई एक बात clear. ठीक है? पॉजिटिव में हम सिर्फ वर्ब के साथ ed ऐड कर देते हैं इफ इट इज अ रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. इफ इट इज अ रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब we can only add ed at the end of the verb and that's it. Like I started playing cricket, I played, I wanted, it rained, she started, she played, she wanted, it rained. Okay, the next one is he started, or we started, we played, you started, you played, you wanted, they started, they played, they wanted. That's it. These all are the positive form of sentences. Now move towards the negative form of sentence. In a negative form, we use did not. We use did not to make negative sentence in the past. And we अब देखें प्रेजेंट में हम क्या करते हैं यूज. प्रेजेंट में हम डू यूज करते हैं. प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं? डू. Remember I told you with the first group of pronoun in which I, you, we, they were present, उनके साथ हम do यूज करते हैं. और सेकेंड ग्रुप ऑफ जो प्रोनाउन होता है जिसमें he, she और it होता है उसके साथ हम does यूज करते हैं. Remember in present tense. याद है सबको? Yes, Kissa? Remember? Okay. इसी तरीके से in past tense हम do या does की जगह did यूज करते हैं with all the pronouns. सारे pronouns के साथ हम did यूज करते हैं अगर हमें negative sentence बनाना हो या interrogative sentence बनाना हो. Example देखते हैं. They don't live, और did के साथ कभी भी second form of verb नहीं आती. did के साथ हमेशा first form of verb आती है. ठीक है? You can write it down in your notebooks. If you want, you can write it down. It will help you a lot. See, in present, it is Kabir Jafar's mic is mute. Okay, so in present we use do and in past we use the word did. They don't live in Canada. Past में ये हो जाएगा they did not live in Canada. देखें अब past में हमने देखें जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था कि प्रेजेंट में जब हम does का वर्ड यूज करते हैं अगर तो हम ये यूज करते हैं she likes mango very much. ठीक है? she likes mango very much. लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस में डज लगा दें तो फिर हम लाइक के साथ एस लगाते हैं. फिर हम लाइक के साथ एस लगाते हैं. अगर हम डज का वर्ड ऐड कर दें नहीं लगाते ना क्योंकि हम ऑलरेडी उसमें डज लिख चुके होते हैं. हम फिर ऐसे लिखते हैं डज शी लाइक मैंगो या यस शी डज लाइक मैंगो. उसमें फिर हम एस ऐड नहीं करते. सेम हैपेंड इन पास्ट. जब हम डिड का वर्ड यूज कर लेते हैं तो फिर आपकी जो वर्ब की फॉर्म है ना तो वो रेगुलर में चेंज होती है ना वो इरेगुलर में चेंज होती है. वो अपनी बेसिक अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही रहती है. अगर मैं लिव को रेगुलर अब लिव जो है यहाँ पे उसको अगर मैं चेंज करूं अपने रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब में तो लिव क्या बन जाएगा? लिव्ड. क्या बन जाएगा? लिव्ड. अगर मैं डिड नॉट हटा दूं तो अ पॉजिटिव सेंटेंस उसको बना दूं तो ये सेंटेंस हो जाएगा दे लिव्ड इन कैनेडा. लेकिन इसे मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना था सो आई राइट दे डिड नॉट लिव इन कैनेडा. ठीक है?
जब मैं did का word use कर लूंगी, after that I will not add ed at the end of the live. Clear? Is it clear? Any confusion? Any question till here? Anything which you want to ask? Is it clear to everyone? Inaya, Kinza, Daniel, Hassan, Hunain, Hassan Ahmad, Sabika, Mariam, Kabir, Dua, Ali. Is it clear? Yes, Jafar, you want to ask something? Yes, Jafar. Jafar, we have only 2 minutes left. Can revise again, please, teacher? Revise what, Jafar? Yeah, about negative sentence. Okay, okay. Jafar, I told you that जब हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम नॉट का वर्ड यूज नहीं करते हैं, ठीक है. पॉजिटिव सेंटेंस में हम सिंपल अपने वर्ब को सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं. अगर तो वो रेगुलर होता है तो उसमें ईडी लगा देते हैं, और अगर वो इरेगुलर होते हैं तो जो भी उसकी सेकंड फॉर्म बन रही होती है वो स्पेलिंग लिख के उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं. But when we talk about negative sentences, in negative sentences, we add a word did not. We add a word did not. Present में हम negative sentence बनाने के लिए do not का word use करते हैं, और past में हम negative sentence बनाने के लिए did not का word use करते हैं. और जिस तरीके से आपके प्रेजेंट में जब हम डू या डज का वर्ड यूज करते थे और वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं ऐड होता था, रिमेंबर, डज शी लाइक अ मैंगो लिखते थे या डज शी लाइक्स अ मैंगो नहीं लिखते थे, क्योंकि वहां ऑलरेडी डज का वर्ड आ जाता था. इसी तरीके से पास्ट में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आती है, वर्ब के साथ ईडी या कोई इसकी सेकंड फॉर्म ऐड नहीं होती. अंडरस्टैंड? ओके जाफर? Okay, it's clear to everyone. Okay, यहीं तक लेक्चर रखते हैं. नेगेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स तक वी विल कंटिन्यू टुमारो. किसा फातिमा एंड मरियम फातिमा, आई असाइंड यू टू एक्सप्लेन today's class in tomorrow's class. Okay, all right. Okay everyone, Allah Hafiz. Yes Jafar, Jafar speak fast. टीचर कल हमारा टेस्ट है. Jafar, I will announce. If I have a test, I will announce. Okay? Okay, everyone. Allah Hafiz. Take care of yourself.